because it has to be transferred to the Lahore. We kept it in our unit for about 15 days. And the Child Protection and Welfare Bureau was wholly involved in that management, and that was exemplary management. Underdeveloped and the far area, in Punjab, like very close to the Sindh, the Bahawalpur. Although the things, the education level, the awareness level, they are not up to that mark. We can see in the big cities like in Lahore and Karachi. But the things, if we take it up, they improve very rapidly. So one thing that is needed, that is the commitment. And we have very good experience over there because this is one of the neglected field. Because as we have been told, the children they can't care for themselves. We have to care about the children. So I'm really thankful to Professor Dr. Naeem Zafar Saab, who has been traveling so many times to the Bahawalpur. It is not easy job. He is one time at Rajanpur, then he tells us that I am coming to Multan next day, and then the day after tomorrow he will be at Bahawalpur. He will be arranging sessions. So in the last meeting, I was really indebted to Professor Dr. Naeem Zafar, and I told to myself that this is now the fruit that we are having all the stakeholders over here under one roof. So this is big achievement, but this is not the final. We have to go forward, and we have to keep it up, and we have to keep this flag of the child protection high. Thank you very much. Thank you very much, Professor Amir, for sharing with us your experiences of Bahawalpur. He talked about capacity building. We are trained pediatricians, and you are sitting in the Pakistan Pediatric Association biannual conference. So, trained pediatricians need capacity building in order to sensitize them for child rights. And to throw some more light on this, I would like to invite on Dr. Muhammad Moaz. He is a member of Pehchan. Also, he's the Vice President of PPA Punjab in the current tenure, and also a child protection consultant. So, sir, can you please tell us about the capacity building of healthcare workers? Assalamu alaikum everyone. बेटा मैं कोई कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं, मैं तो अपनी कहानी सुनाने आया हूँ। तो जब मैं डॉक्टर नई बात कर रहे हैं 2002 में हमने डॉक्टर बन के ट्रेनिंग में मेरी गुड लक थी कि बैड लक थी कि मैं इनका स्टूडेंट था और ये मेंटर थे। आई डोंट नो वेयर गुड लक और बैड लक। तो एट दैट टाइम दैट उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि दिस इज वेरी गुड, वी हैव टू वर्क। मैं खुद कन्विंस था अंदर थाने की क्या है। तो एट दैट टाइम उसी टाइम में यूनिसेफ का बहुत बड़ा रोल। उस टाइम पे शमशाद साहब हुआ करते थे। शमशाद साहब खुद बहुत सेंसिटाइज थे शमशाद कुरैशी, और उन्होंने हमारे साथ मिल के देन वी हैव स्टार्ट टू द ट्रेनिंग्स, and we have started training of the doctors, health professionals, teachers, then all the other stakeholders. हमने trainings करना शुरू की और लोगों को sensitize करना शुरू किया। I am talking about 2002, 2003, 2004, 2005. That's the time we have done lot of trainings. लेकिन मैं आपको ये फर्क बताना चाहता हूँ कि अब और उसमें क्या फर्क है। उस टाइम पे हम -8, -7, -6 पे थे। Why -8? हम denied phase पे थे। हम बात करते थे, कहते डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। हम ट्रेनिंग करते थे, कुछ हाँ है लेकिन कोई बात वो थोड़ा है, मतलब इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। जब एक चीज़ को आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, जैसे हम कोरोना आया था तो हम कोरोना को एक्सेप्ट ही नहीं करते। कोरोना एक बीमारी, तो हाउ कैन यू इम्प्रूव इट। तो हम कोरोना उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। लेकिन ग्रेजुअली हमने इस पर काम करना शुरू किया। हमने then UNICEF with us, then we have made a child protection unit in the children hospital. हम at least डॉक्टर समझने लग गए। डॉक्टर ने कहा ये प्रॉब्लम है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल बना, हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाया, वह डाटा करना शुरू किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को हम पे काम करते रहे, डाटा हमारे पास आता रहा, हम इसे करते रहे। लेकिन हमने ये रियलाइज किया कि यार ये तो प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही। तो दैट्स द थिंग इज दैट के जो है उसके बाद हमने रियलाइज करना शुरू किया कि नहीं, इसको तो ये तो जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम टर्शरी लेवल पे काम कर रहे हैं। असल प्रॉब्लम तो ये टिप ऑफ आइसबर्ग, असल प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा नीचे पड़ी हुई है। तो वी हैव टू थिंक टू वर्क एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल।
تو انہی دنوں میں جو ہے میں جسٹ اپنی کہانی سنا رہا ہوں. ڈاکٹر نور میرے ایک دم آئے کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے تھے. ان کو ایک پروجیکٹ ملا تھا UNDP سے، جو فیمیل بزنس تھی نا جو ان کی، انہوں نے کہا نہیں یار بچے بھی ہیں جو بیچارے جنہوں نے کوئی قصور نہیں کیا ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ وہاں سے جا سکتے ہیں. میں نہیں جا سکتا ہوں. لیٹس وی اسٹارٹ. ہم نے وہاں پہ میں نے کام کرنا شروع کیا. اینڈ دین وی آل دیس پریونٹیو میجر وی اڈاپٹ دیئر. آئی تھنک نو اٹس 1 year project, 6 month project. اور ودن 3 months ہم نے وہاں پہ کام کیا تو بچے بیماری انہوں نے ختم ہو گئے. وہاں پہ بیماری نہیں ہوتا تھا، بچے خوش رہنا شروع ہوئے. کوئی ایسا مطلب چینج بھی جیسے پریکٹیکل ورژن آپ سوچتے ہو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہو تو بیسٹ پریکٹیکل. تو فرام دیئر وی گیٹ اٹ کہ ہاؤ کین وی پریونٹ اٹ. فار دی فرسٹ ٹائم وی جسٹ میں آؤٹ آف نہیں. اس کے بعد جو ہے دین جو ہے ہم نے اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ آئے. ہم نے دین وی ہیو میڈ اے مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ پروموشن سینٹر. دیٹس خوشحال خاندان پروگرام. دس از اور پرائمری اینڈ سیکنڈری لیول. اور جو ہے ہم نے مختلف چھوٹے چھوٹے ٹاؤنس میں مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ پروموشن سینٹرز بنانا شروع کیے جو کہ ہمارا خوشحال خاندان پروگرام ہے. دیٹس بلیو آن ہیلدی مدر، ایک صحت مند ماں صحت مند بچے کی ضمانت. بلکہ ہم آپ کو کہتے ہیں خوشحال خاندان از بیسیکلی از اے ریئل پروٹیکٹیو. اب وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیلدی مدر تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مینٹل فزیکل اینڈ سوشل ہیلتھ. تو ہم مینٹل فزیکل سوشل ہیلتھ اینڈ وائی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مینٹل اینڈ فزیکل سوشل ہیلتھ کو پروٹیکشن. بچے کو پروٹیکشن کون دے رہی ہے؟ ماں دے رہی ہے. جب وہ مینٹلی فزیکلی سوشلی پروٹیکٹڈ ہوگی تو ایک صحت مند بچے کی ضامن بنے گی. We have started to work at primary and secondary level پہ. Now with the help of again UNICEF ہمارے ساتھ چل رہی تھی تو ہم نے CPU جو کہ ٹرشری سینٹرز ہیں وہ ہم نے جو ہے بنانا شروع کر دیے مختلف ہاسپٹلز میں. اور اس میں جو کمال یہ تھا کہ اب لوگ ہم ڈینائل فیز سے نکل آئے. ہم یہ کہتے ہیں ہاں یہ پرابلم ہے ہم نے حل کرنی ہے. میں اس طرح مجھے بتاؤ. اب ہر بندہ عمل کی طرف جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے بلیو کیا، اب لوگ عمل کر رہے ہیں کہ دے اسٹارٹ ڈوئنگ. اب لوگ -4 سے 0 +1 +2 پہ آ رہے ہیں. آج جو 20 years کا سفر ہے میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ لوگ پلس میں، اور آپ بڑی جلدی بڑا اچھا رزلٹ دیکھیں گے جو اس طرح کی میٹنگز ہو رہی ہیں. اب سولوشنز کی طرف ہم آ رہے ہیں. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ بہت بڑی پرابلم ہے بھی کہ نہیں، یہ پرابلم ہے کہ نہیں. اب ہم سولوشن کی بات آ رہے ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے ٹرشری لیول پہ ٹھیک کرنا ہے، ہم نے کیسے اس کو پرائمری اور سیکنڈری لیول ٹھیک کرنا ہے. یہ پرابلم ہماری پرابلم ہے اور ہم سب نے مل کے ٹھیک کرنا ہے. یہ آل دی اسٹیک ہولڈر جو بیٹھے ہوئے ہیں اس میں دیٹس یونیسیف کا بہت بڑا رول ہے. کیونکہ لاسٹ 20 years سے یونیسیف کام کر رہی ہیں. میں میڈم زاہدہ کہوں گا، انہوں نے کہا نہیں سو سارے دیٹس انیشیٹو اگین کہ ہمیں CPU سینٹر چاہیے ان ایوری ڈسٹرکٹ. دیٹس از اے ویری گڈ انیشیٹو. اور جب CPU سینٹر بن جائیں گے تو ہم ٹرشری کے کمانڈ ٹریٹ کرنے لگیں گے. ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ یا دوسرے مدر ہیلتھ پروگرام ہیں یہ ساری چیزیں آئیں گی. تو ہم یہ تینوں سٹیج پہ چائلڈ پروٹیکشن دینا شروع کر دیں گے، پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری لیول. تھینک یو ویری مچ. جسٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل مائی اون اسٹوری. Thank you very much. It was a very encouraging story, sir. Whenever there is a population or a subset of people who need protection, you need a defender. So we have amongst our ranks of panelists a very astounding figure who has established himself, at least we know him, as a defender on child rights. Whenever there are rights, you need legal implications. And to talk on the legal aspects of child protection, I would like to invite Sayyid Miqdad Mehdi to please throw some light on the legal aspects of child protection. Over to you. Thank you so much. First of all, I would like to thank PTF, Ilham, Dr. Naik Zafar, Dr. Fayal Mohammed and all my seniors. 20 سال پہلے میں نے ان کے ساتھ about like 2005-06 I started working with Dr. Naim and Dr. Tufail اور working group against child sexual abuse and exploitation کا میں as a coordinator کام شروع کیا ان لوگوں کے ساتھ. اور 20 سال پہلے جیسے ڈاکٹر معاذ اپنی اسٹوری سنا رہے تھے تو اسی طرح مجھے بھی یاد آ رہا تھا کہ ہمارے پاس نیشنل پلان آف ایکشن جو ہم نے نیا اپروو کروایا تھا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی تھی. نیشنل پلان آف ایکشن اگینسٹ چائلڈ سیکسول ابیوز اینڈ ایکسپلائٹیشن. ہم ڈینائل موڈ میں تھے. جس سے بات کرتے تھے وہ کہتا تھا اس سے بات کرنے مناسب نہیں ہے. مجھے یاد ہے گزرا والا میں ہم گئے ایک میڈیا پرسونرز کے ساتھ اسی طرح کی ٹاک تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو رپورٹ نہیں کرتے برائی کو، اگر آپ جو ہے وہ رپورٹ کریں گے تو وہ اور پھیلے گی. یعنی یہ کنسیپٹ تھا. ڈینائل تھا. لوگ مانتے نہیں تھے. لاز بھی موجود نہیں تھے. انٹل اینڈ انلیس
20 ایئرس کے اگر پیریڈ میں دیکھیں تو کچھ لاز بنے اور اسپیشلی لاسٹ 10 ایئرس کے اندر کچھ لیگل سائڈ پر کام ہوا اور وہ بھی زیادہ تر نہیں جب ایکشنس تھے یا ہم نے کوئی رپورٹ سبمٹ کروانی ہوتی تھی اس وقت تو لا آ جاتا تھا یا کوئی بہت بڑا ہوا جیسے سوٹ کا انسیڈنٹ ہو گیا زینب کا انسیڈنٹ ہوا تو ہمارے پاس لاز آنا شروع ہوئے. میں فریکوینٹلی سم ٹائم جب ہاسپٹلس کے اندر بھی ایسے کیسز آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم پہچان ریفر کرتے ہیں تو ان سے جب بات کرتے ہیں تو وہ کیس کو پرسو ہی نہیں کرنا چاہتے. موسٹلی جو پیرنٹس ہیں یا موسٹلی جو کمپلیننٹ سائڈ ہے وہ اس طرح جانا ہی نہیں چاہتے کہ ابیوزر کے خلاف کوئی کارروائی یعنی سسٹم کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے. اور اس کی ریزنز ہیں ان کے پاس سالڈ ریزن ہے کہ کون عدالتوں میں جائے گا, کون وہاں پر پیشیاں کرے گا, اس کو کنکلوڈ کروائے گا. یہ ایک سیڈ سائڈ ہے اس سائڈ کی. لیکن 20 سال کے اندر ہم نے کافی ساری ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں. ہمارے پاس چائلڈ پروٹیکشن کے لاز ابھی بتا رہے ہیں کہ اپنا چائلڈ پروٹیکشن تھا کہ ایکٹ 2011 جو پاس ہوا سندھ کے اندر. اس سے پہلے ہم نے چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو الیکٹڈ چلڈرن ایکٹ 2004 کے تب جو ہے وہ بنایا اور اس کو جو ہے لا کو انٹروڈیوس کروایا. اور وہ لا بھی ایک بڑا انسیڈنٹ تھا جس کا میں نے ذکر کیا کہ جاوید اقبال نے 100 بچے کو مار دیا, مار کر ڈیلیوٹ کر دیا اس تعداد کے اندر اور کسی کو پتا بھی نہیں تھا, کوئی سیریس بھی نہیں لے رہا تھا. اس نے خود لیٹر لکھ کے بتایا پولیس کو کہ میں نے یہ کام کر دیا. پولیس پھر نہیں مان رہی اور جو ہے اب یہ لاز جو ہے مسلسل بنتے چلے آ رہے ہیں. 2016 کے اندر ہمارے اینٹی ریپ جو ہے کچھ لیجسلیشن ہوئی, ریپ وکٹم کو پروٹیکشن دینے کی کوشش کی. ہم اس وقت تک جب چائلڈ سیکسول ابیوز پہ کام کرتے تھے تو ہمارے پاس ریلیونٹ سیکشن ہی موجود نہیں تھا. چائلڈ سیکسول ابیوز کو ڈیفائن ہی نہیں کیا گیا تھا کہیں پہ کہ پاکستان پینل کوڈ کے اندر یا کسی اور اسٹیچوٹ کے اندر وہ اس چیز کو ڈیفائن کیا جائے. لیکن 377A اور 377B کے سیکشن جو ہیں وہ 2016 کے بعد آئے. ہمارے پاس فیڈرل لیول کے اوپر کچھ لاز بڑے اچھے پاس ہو گئے جس کے اندر الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے, جس کے اندر ٹریفکنگ کے لاز ہیں. 2016 کے اندر ہی ہمارے پاس چائلڈ لیبر کے لاز جو ہیں وہ پاس ہو گئے. جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ جو ہے وہ پاس ہو گئے 2018 کے اندر. تو مختلف لاز مقصد ان کا یہی تھا کہ چائلڈ پروٹیکشن کو جو ہے وہ انشور کیا جا سکے. کیونکہ اگر ہم UNCRC پہ کمٹمنٹ دیکھیں تو ہماری کمٹمنٹ تو یہی ہے کہ تمام رائٹس جو ہیں وہ بچوں کے لیگل پروٹیکشن میں سے ایک رائٹ ہے اور مختلف جو ہے وہ لیجسلیشنز جو پروٹیکشن سے متعلق ان کا مقصد بھی یہی تھا. لیکن جب ہم انفورسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی یہاں پر شدید پرابلمز ہیں. شاہین بیٹھی ہیں مسلسل اس بات پہ کیا ہم اس چیز کو جب اچیومنٹ سمجھتے ہیں کہ لا بن گیا یہ اچیومنٹ نہیں ہے. ان کا بالکل یہ صحیح پرسپیکٹیو ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کتنی ہو رہی ہوتی ہے. امپلیمنٹیشن کی میں بات ابھی ریسنٹلی مجھے 3-4 سال مسلسل پولیس اکیڈمیز کے اندر جانے کا موقع ملا ٹریننگ کے حوالے سے انویسٹیگیٹرز. آپ یقین کیجیے کہ جب وہاں پر جا کے جب ان سے پوچھتے ہیں کہ ابیوز کیا ہوتا ہے تو 90% جو ہوتے ہیں انویسٹیگیٹر ہوتے ہیں بچوں کو گالی دینا. اس سے زیادہ ان کو نہیں پتا کہ ابیوز کی ڈیفینیشن کیا ہے. اچھا پوچھتے ہیں کہ بچہ کس کو کہتے ہیں. اپنے گھر کا بچہ ان سے پوچھیں گے آپ کے گھر میں کتنے بچے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یا آپ کے گھر میں جو بچے ہیں ان کی عمریں کتنی ہیں. تو اپنے گھر کے اندر جو 42 سال کا اس کا اپنا بچہ ہے وہ بھی اس کو بچہ لگتا ہے. اور جو باہر میں سسٹم کے اندر جو لیگل سسٹم کے اندر کوئی چھوٹا بچہ بھی آتا ہے یہ بچہ نہیں ہے, اس کو بچہ نہ سمجھیں. یعنی اس کو ڈیفینیشن کے حوالے سے اتنی کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ بچہ جو اس سسٹم کے اندر آ رہا ہے اس کی ریزنز کیا ہیں. اس کی ریزن ابھی پاسبلٹی کے ڈرس ہیں. ڈرس اس کو شیپ کر رہے ہیں. سوسائٹی اس کو ایسی اپرچونٹی دے رہی ہے کہ وہ کسی ظلم کے اندر آ رہا ہے یا وہ کسی مسئلے کا شکار ہو رہا ہے. چائلڈ سیکسول ابیوز کے اوپر بہت سی لیجسلیشن ہو چکی ہے, بہت اچھے لاز ہیں, انفورسمنٹ کی کمی ہے. چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کی جو شدید ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر ہم مسلسل پچھلے 10 سال سے بات کر رہے ہیں. چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے اندر 100 سے زائد بچوں کی ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہیں. چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے اندر بچوں کو تھپڑ مار کے مار دیا گیا. چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے اندر بچوں کو گٹر کے اندر ڈمپ کر دیا گیا. طوطے اڑانے پہ بچوں کو مار دیا گیا. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر چائلڈ ڈومیسٹک لیبر جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ ٹرینڈ جو ہے وہ سلیوری کا ٹرینڈ ہے. یہ گھر میں ملازمت کروانے کا ٹرینڈ نہیں ہے, یہ سلیوری کا ٹرینڈ ہے کہ آپ ان کے ماں باپ کو پیسے دے دو اور گھر کے اندر بچہ رکھ لو. بچہ آپ کا صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ بچہ آپ کے گھر میں کام کرے گا. آپ اپنی ہی عمر کے بچوں کو تیار کر اسکول بھیجے گا, اپنی ہی عمر کے بچوں کو جب اسکول سے ریسیو کرے گا. رات کو جب آپ کے بچے سو جائیں گے تو وہ بچے سوئیں گے کہیں پہ کونے گزرے میں اور آپ کے بچے آپ کے ساتھ بیڈ روم میں سوئیں گے. تو یہ ایک سلیوری کا ٹرینڈ تھا جس کے اوپر ہم نے نیشنل کمیشن آف چائلڈ رائٹس یہ بڑا اچھا ایک لا جو 2017 کے اندر پاس ہوا جس کے اندر جو ہے ایٹ لیسٹ
ہماری جو چائلڈ رائٹ سے ریلیٹڈ کنسرنس ہیں ہم ان کو پہنچاتے ہیں اور وہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کے پاس مینڈیٹ ہے کہ وہ اس کو پرسو کر سکیں. تو لیکلی ان کے ساتھ مختلف کنسلٹیشن ہوئی اور ہم نے اس ایشو کو ابھی مجھے مہک جو وہ بتا رہی تھی کہ جو ان کا بل ہے چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے اوپر کہ اس کو پینلائز کیا جائے. آج جتنی بھی آپ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے کیسز دیکھ لیں کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی اس ایشو کے اوپر کہ کسی کو آپ نے کسی بچے کو اپنے گھر میں رکھا. آپ کو اگر کسی ایک دو کیسز میں سزا ہوئی ہے جس میں ایک بڑا فیمس کیس اسلام آباد کے اندر ہوا جس کے اندر ایک جج صاحب کو سزا ہوئی, وہ جج صاحب کو سزا چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے اوپر نہیں ہوئی, 328A میں کروٹی ٹو چائلڈ پہ ہوئی کہ بچے کے ساتھ ظالمانہ سلوک رکھنے کے اوپر ہوئی. اس بات پہ نہیں ہوئی کہ اس نے گھر کے اندر چھوٹا بچہ رکھا ہوا تھا کیونکہ لا ہی نہیں ہے, پراپر لیجسلیشن ہی موجود نہیں ہے. تو نیشنل کمیشن نے اس پہ جو ہے وہ کافی اس پہ کام کیا ہے اور ہمارا جو بل ہے اس میں نے تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کیا اس کو ڈرافٹ کرنے کے اندر, اس کو فائنلائز کرنے کے اوپر پورے پاکستان کے اندر کنسلٹیشنس کی اور ہم اس موقع میرا خیال ہے کہ وہ جلد اسمبلی میں پہنچ جائے گا پاس ہونے کے لیے. اسی طرح کارپورل پنشمنٹ ڈراپ آؤٹ کی سب سے بڑی وجہ اسکولوں کے اندر کارپورل پنشمنٹ ہے. ہم نے 2017 میں نے ایک ریٹ فائل کی تھی جب اسپیشل بچوں کی کلاس کے اندر جو ہے وہ بچوں کے اوپر جو ہے وہ لوہے کے راڈ کے ساتھ وہ ویڈیوز وائرل ہوئی. سنڈیال کے اندر ایک لاہور کے اندر لوہے کا راڈ پکڑا ہوتا ہے, کنڈکٹر نے سرکاری بس ہے, سرکاری ملازم ہے, بچوں کو لے کر جا رہے ہیں اور ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے ان کے پاس ڈسپلن کی ٹیکنیک ہی نہیں ہے, تو انہوں نے کیا لوہے کا راڈ پکڑ کے تو وہ اسپیشل بچوں کو وہ ڈسپلن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور زور زور سے مار رہا ہے. اس کے اوپر میں نے جب ریٹ فائل کی رکھنے بھی میرے ساتھ تھے, ہم سب اکٹھے ہو کر منصور علی شاہ صاحب اس کے چیف جسٹس سے ہم گئے تو پہلی دفعہ کارپورل پنشمنٹ کا ایشو تھوڑا سا پنجاب میں اس طرح سے ہائی لائٹ ہوا. جب اس سے پہلے ہمارے پاس ایک نوٹیفکیشن تھا مار نہیں پیا, لیکن کوئی ڈیفینیشن نہیں تھی کارپورل پنشمنٹ ہوتا ہے کہ اسکول کے اندر کون سی سزا دینی چاہیے, کون سی سزا نہیں ہونی چاہیے, کس قسم کا بیہیویئر ہونا چاہیے. تو مجھے یاد ہے کہ 2018 میں جنوری کے اندر جب یہ نوٹیفکیشن ہوا کہ کارپورل پنشمنٹ کہ بالکل ممانعت ہوگی اسکولوں کے اندر, تو کارپوریٹ پنشمنٹ کی چیف جسٹس نے کہا کہ اس کی ڈیفائن کریں گے ہوتی کیا ہے. تو اس وقت ہم نے سنگھ کا جو کارپوریٹ پنشمنٹ ایکٹ تھا اس میں سے وہ ڈیفینیشن جو ہے وہ مستعار کی آن دا ڈائریکشن آف چیف جسٹس. تو وہ ایک نوٹیفکیشن ہوا, اسٹل ہم وہ لا جو ہے وہ لیک کر رہے ہیں پنجاب کے اندر. کوئی ایسا لا نہیں ہے جو کارپورل پنشمنٹ ہو. کارپورل پنشمنٹ اسکولوں کے اندر, کارپورل پنشمنٹ چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز کے اندر, جوینائل جسٹس سسٹم میں جو بچے کہیں پر جیلوں کے اندر نہیں جانے چاہیے بیسیکلی, بلکہ زیادہ سسٹم تجویز کیا گیا ہے جہاں پر بھی بچوں کو رکھا جائے وہاں پر بچوں کے اوپر تشدد نہیں ہونا چاہیے. تو کارپورل پنشمنٹ کا جو لا ہے وہ کمپریہنسو ہونا چاہیے کہ ہماری ریکوائرمنٹ رہی ہے اس کے اوپر مسلسل ہماری ڈبیٹ ہو رہی ہے, لیکن ابھی تک لیجسلیشن اس کے اوپر بھی موجود نہیں ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو ٹریفکنگ کا آج کل جو ایشو ہے چائلڈ ڈومیسٹک لیبر یا چائلڈ لیبر کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے, ٹریفکنگ ابھی میں نے بھی سلائڈ میں بتایا کہ کس طریقے سے بچے جو ہے وہ ٹریفک ہو رہے ہیں دوسرے صوبوں کے اندر. تو لکیلی جو ہمارے پاس ٹریفکنگ ان پرسن ایکٹ 2018 پاس ہوا تھا وہ بہت اچھا لا تھا, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو رکھ کر مد نظر رکھ کر وہ پاس کیا گیا تھا. اور اس کے اندر دو کیٹیگریز بنائی گئی تھی, انٹرنل ٹریفکنگ اور ایک ایکسٹرنل ٹریفکنگ. اس سے پہلے یہ موجود نہیں تھا. اور انٹرنل ٹریفکنگ یعنی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بچوں کی منتقلی فار any illicit purposes اور exploitation purposes کے لیے, اور ایک ایکسٹرنل ٹریفکنگ یعنی کسی دوسری جو جیوگرافیکل باؤنڈری سے بچے یا عورت کو یا شخص کو لے کر آنا یا لے کر جانا. تو اس لا کے اوپر ابھی تک ہماری پولیس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکی کہ انٹرنل ٹریفکنگ کے اوپر ہم کوگنیزنس لے سکتے ہیں. تو ٹریفکنگ اتنا زیادہ یہ بڑا ایشو ہو گیا ہے جو لنک ہے فورس لیبر کے ساتھ بھی, چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے ساتھ بھی اور لیبر کے ساتھ بھی. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ پروٹیکشن کی لیگل فریم ورک کے اراؤنڈ اس کے اوپر مسلسل بات بھی کر رہے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن کی بات بھی کر رہے ہیں. کیپیسٹی بلڈنگ تو سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل اسٹیک ہولڈر ہے اس کے متعلق جو ہے وہ لیسٹ اس کا نالج ہے. اگر ٹریفکنگ ان پرسنز ایکٹ کے تحت کوئی کیس رجسٹرڈ ہوتا ہے تو پروسیکیوٹر کو نہیں پتا کہ اس نے کیسے اس کو پرسو کرنا ہے اور کس طریقے سے سزا دلوانی ہے. پولیس کو نہیں پتا کہ اس کی انویسٹیگیشن کو کیسے انٹرنل ٹریفکنگ میں جو ہے وہ لے کر چلنا ہے اور اس کو سزا کا انشور کرنا ہے. جو لیبر ڈپارٹمنٹ نے فگرز شو کیے ابھی ریسنٹلی, اس میں سے زیادہ تر کیسز کے اندر ان کی طرف سے یہ بات آئی کہ ہم نے ڈیفالٹ میں بس میں اٹینڈ کر رہی تھی ورک شاپس اور اس کے اندر. سو آئی اسٹل ریمبر گوئنگ ٹو دس ورک شاپ. آئی تھنک اٹ واز سم ایریا جہاں پہ کچھ مولوی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ چائلڈ سیکشل ڈاکٹر صاحب آپ چائلڈ سیکشل ابیوز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یہ تو آپ بہت غلط بات کر رہے ہیں, تو اسلام کے خلاف ہے کہ آپ اس طرح اوپنلی بات کر رہے ہیں. Even as a child, I remember
کہ اس ٹائم پہ اٹ واز اگین اتنی نیگیٹیوٹی تھی, اتنی ڈینائل تھی, اور اتنا زیادہ تھا کہ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا. سو وی ہیو ایکچولی کم اے لانگ وے, ایز مقداد از آلسو مینشن, when it comes to laws and policy making, and how he's defined what child abuse and neglect is. ہماری لیگل ڈیفینیشنز تھوڑی اسٹرینتھن ہوئی ہیں, ہمارے اب سسٹم مینجمنٹ, کیس مینجمنٹ اینڈ ریفرل سسٹم جو سسٹمیٹکلی ہم نے کس طرح ڈیل کرنا ہے چائلڈ ابیوز اینڈ نیگلیکٹ کو, وہ چیزیں جاری ہیں. ایز این سی آر سی ہم لوگ ریئلی پوشنگ فار چائلڈ پروٹیکشن پالیسیز ہر صوبے میں. سو ناٹ جسٹ پنجاب, پنجاب میں پھر بھی ہم لوگوں کی جو سی پی ڈبلیو بی ہے وہ لیڈ لے رہی ہے, اٹس ڈوئنگ ریئلی گڈ جاب کہ ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں چیزیں جا رہی ہیں. But when it comes to other provinces as well, we need, because I feel کہ ہم لوگ child protection policy پہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں, but ابھی بھی because of certain loopholes, because of certain barriers, وہ چیزیں اس طرح move نہیں کر رہی. However, we are pushing for child protection policies at in all provinces. Case management and referral systems کو strengthening, اس کے اندر ہم involved ہیں. ایک سوال جو ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا, آئی جسٹ وانٹ ٹو شیڈ سم لائٹ, بیکاز while we are working on child protection policies and case management and referral system, especially in hospital settings, we also have to understand and we also have to see how are we making our own hospitals a safe place for children. Because ہمارے پاس کچھ ہفتے پہلے ایک کیس آیا تھا جہاں پہ ایک ہاسپٹل اسٹاف ممبر نے ہی چائلڈ سیکشل ابیوز کیا تھا ان دا ہاسپٹل. سو واٹ as clinicians and as people who are working in hospitals and tertiary hospitals especially, ہم لوگوں کو یہ ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہاسپٹلس کے ایس او پیز کس طرح اسٹرانگ کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کو ود ان ہاسپٹل سیٹنگ سیف رکھ رہے ہیں فرام ایوری ون, فرام we don't know who the perpetrator could be. So one thing that I feel that we really need to reflect on at this platform is how are we keeping our hospitals safe for children within hospitals, within ہمارے جو BHQs, THQs ہیں سارے, مطلب it's not just about tertiary level but also at the primary and secondary level. So legal policy میں مقداد نے بہت اچھی طریقے سے سارا ریفلیکٹ کیا ہے کہ کس طرح ہم لوگوں نے اتنے عرصے میں کتنے لاز ہم نے ڈیفائن کیے ہیں, کتنی چیزیں بنی ہیں, یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. لیکن یہ چیز جو ہے اٹ از وہی بات ہے, امپلیمنٹیشن ہم کر ہی نہیں سکتے جب تک ہمارے پاس سوشل بیہیویئر چینج کی کمیونیکیشن جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوتی, اویئرنیس ریزنگ ہماری اسٹرانگ نہیں ہوتی. جس طرح کہ راولپنڈی میڈیکل کالج کے اندر ہمارے اب کریکولم کا حصہ ہے کہ آپ جب ڈاکٹر بن رہی, آپ کے ڈاکٹرز دے نو کہ چائلڈ ابیوز نیگلیکٹ نہ صرف کیا ہے اور کس طرح اس کے ریڈ فلیگس دیکھتے ہیں, بٹ آلسو اس کی کیس مینجمنٹ کے اوپر ان کو آلریڈی ٹرینڈ ہے. So not just like Rawalpindi Medical College, we need to replicate this model in other teaching hospitals and see how we can integrate it in not only the curriculum for doctors but also جس طرح ہماری nurses train ہو رہی ہیں as like پہچان, مطلب ابھی 2 سال سے پہلے میں پچھلے 10 سال سے CPU کو دیکھ رہی ہوں بہت کلوزلی ایز ڈائریکٹر پروگرامس, اور ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے بڑی اسٹرینتھ جو ہے وہ ہماری نرسز ہی ہیں. بیکاز کبھی کبھار ڈاکٹرز ذرا زیادہ بزی ہوتے ہیں لیکن دا نرسز وہ بیٹھ رہی ہیں, اٹھ رہی ہیں پیشنٹس کے ساتھ. سو کریکولمس فار نرسز, ان کے اندر انٹیگریشن بہت ضروری ہے چائلڈ پروٹیکشن کی, کہ کس طرح ہم کر سکتے ہیں. ابھی ہم لوگ پالیسی بریف کے ساتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں, جس طرح ڈاکٹر عائشہ مناز نے مینشن کیا کہ جس طرح ہاسپٹلز ہیں اس طرح اسکول بیسڈ چائلڈ پروٹیکشن سسٹمس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. So we are working on a policy brief for developing protective school systems for children in schools, اور وہ بھی hopefully in the next couple of months ہمارے پاس چیز آ جائے گی. کافی چیزیں ہیں جو ریپیٹ ہوئی, مطلب ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ کلینکلی ہمیں کس طرح کی چیزیں دیکھنی ہیں, لیگلی ہمیں کس طرح اسٹرینتھن کرنا ہے. بٹ واٹ از مور امپورٹنٹ از اس کمرے میں صرف نہ صرف جو اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں بٹ باقی سارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, باقی ہمارے جو امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی کوآرڈینیشن جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیر از وی کین ورک, ہم تھوڑا لمیٹیڈ کام نہیں کر سکتے اگر ہم سائلوز میں کام کریں. It's very important to integrate this system and see how we can
strengthen all these coordination systems from schools to hospitals to हमारे child protection authorities are within our provinces and with people who have technical know-how. This is not something जिसको आप कहेंगे अच्छा ये we need to have technical background to understand, to prevent, to detect child abuse and neglect. And it is something that we, जिसकी professional training होना बहुत ज़रूरी है. So again, I would say कि when we are working for case management and referral system, it is very important to take a very holistic approach. When we are looking at a child, we have to look at the mental, psychological, physical well-being of them. Not only them, but also the family dynamics. उनके familial factors क्या है, risk factors क्या है, उनको देखना. Plus हम किस तरह अपने जो service delivery है और strengthen, especially जिस तरह हमारे child protection authorities हैं, वो किस तरह lead ले सकती हैं, especially child protection case management and referral systems. So I think I'll just close with saying that we can only manage and work on child protection if we do it together with all the stakeholders. Thank you. Thank you very much, Ms. Manek. With this, we are almost nearing our culmination of the session. But we would like to take comments from our worthy guest of honors, one by one. So first of all, I would like to request National Commission for Human Rights Punjab member, Mr. Nadeem Ashraf, to give his 2 cents on today's session. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. It is a privilege and a pleasure for me to be here this morning. We had a very constructive session with a lot of suggestions and a lot of work which has been done regarding child protection, child referral system. First, I would like to congratulate the PPA, Dr. Naeem Zafar Saab, for his efforts and his colleagues' efforts, and all the participants who are there who have done a lot of work in this field. National Commission for Human Rights, we are a state institution और हमारा focus जो है that is the upholding of human rights which have been guaranteed by the Constitution and our obligation under international covenants. जब हम child rights की बात करते हैं, UNCRC is the foremost और हमारी जो आइन में हमारे वेरियस कवानीन में, लेकिन issue implementation का है. So the government is responsible for ensuring protection of rights, especially child rights, I would say. लेकिन empirical जो सामने चीज़ आती है, जो facts सामने आते हैं, उसमें वो focus government का नहीं है, या it's not to be done. अगर हम देखते हैं out of school children is increasing to 25 million. We talk about child labor. जब child protection की बात करते हैं, तो environment plays a very important role in the safety of the child. When even in Punjab there are 7 million children in child labor and 12 million out of school in Punjab, 25 million is the country. So there is a vulnerability of the children to be sexually, physically and psychologically abused. So this is where we need to focus. As Secretary Education Punjab, मेरे सबसे बड़ी frustration कई बार ये होती थी कि allocation of resources of priority नहीं है education. So that is where the complementary efforts of the civil society organizations and people like all of you sitting here, who are very privileged in the sense in terms of education, in terms of influence, in terms of your interaction, but it's very commendable that you have come forward and to provide the facilities, protection, and a systematic method of ensuring the rights to the children who have been traumatized. अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. You all, I think, keep it up, and I the National Commission on Human Rights जो है, we support and appreciate this effort, and we also expect that your organization, you have, डॉक्टर साहब मैं ये बात कर रहा था कि आपका डॉक्टर्स का रोल जो है primarily is providing a quality medical care to the patients, but you have transcended from that. You are now having a centers which has linkages with the law enforcement agencies, with the social protection authorities. I think this is a work which is commendable, and
I wish all the best. There is a lot of things to be said. लेकिन ये चीज़ है कि it's a very challenging issue. We have this thing in mind. ये रातों रात ठीक नहीं होगा, लेकिन कल्चरल चेंज की बात है. जिस तरह यहाँ बात हुई डॉक्टर किशोर साहिबा ने कि मैजिस्ट्रेट्स को नहीं पता कि चाइल्ड राइट्स के बारे में क्या आगाही है, पुलिस ऑफिसर्स को नहीं पता, विकास साहब ने बताया. So this is where awareness comes in. This is where people like you come in. That you go in for training sessions and bring focus on the canvas कि ये चीज़ भी आपने focus करनी है, उस पर आपने काम करना है. So having said that, I think this task needs to be continued with all zeal and vigor. एक missionary spirit के साथ, and we will, and definitely there will be positive outcome. बात हुई है despondency की, despondency बिल्कुल कोई ऐसी requirement नहीं है, because we have to move on an upbeat note. और इसी upbeat note के साथ इंशाल्लाह lot of progress will be made in protection of children in time to come. Thank you. Thank you very much, Mr. Nadeem, for your valuable comments. Now, I would request Madam Shaheen Atikur Rahman. I've heard so much about you, and sitting over there, I must say you have an excellent sense of humor. So please. What else can a beard say? It's just one word, if you know. पहले तो साहिबा की बात की तो हमारी जो पहली मुलाकात में बताना चाहूँगा. I was posted in Gujarat and she was Minister for Social Welfare. It's 1986. तो ये सुबह उनका 8 बजे आना था. She was there at 7 and she was wearing joggers and she was so active then. And mashallah, she's still active. She's still very active. Please, madam. This is the difference between Sikh and Dr. Naeem, like the rest, I have praised that while the doctors are loosening our pockets, you are doing something for others. Great people you have collected, but I am sorry to say that it is all NATO. You know what NATO is? No action problem. Every day, 11 children are being raped, and mostly to death. Stunting mein, mashallah, nazar na lage, we are now the first highest number in the world. I came yet last night from sports gala in a remote village in Rahimiyat. Not one child was injured. Nutrition is given to the boy, not to the girl. And then the whole system starts of difference. मुसलमान हैं, हज में हम एक हैं, लेकिन पैदाइश में दो. Today one of the highest हमारे सदके जहाँ बैठे हैं मकदार साहब. सबसे ज़्यादा आजकल जो मर्डर हो रहा है, भाई बहनों को मार रहा है प्रॉपर्टी के लिए. The younger the child, the girl child, the quicker it goes. When Bangladesh is triple in education in us, when people have gone to the moon and back, we still thinking कि लड़का अच्छा है लड़की. It's not a homework. It's not only the doctors who have to do it. It's all up to us, especially Arshad, you and your education department. This entire failure, Dr. Naeem, is because of the education department. They haven't left the curriculum of the British, where there is divided rule. And I was so happy of both these girls from Karachi, who are trying to make an effort. हम तो जब पैसा होता है तो कलमा भी भूल के दौड़े चले जाते. But we are not going for the ज़मीर. हम सबकी ज़मीर मर गई. And I tell you, बहुत बातें कर रहे थे सारे ये bigwigs. तकरीरों में domestic abuse of servants to children is on the increase. Drugs is on the increase of children as young as 8. मार धाड़ तो is another issue. अगर remember, abuse has ये motorcycles वगैरह आप देखें बहुत हो गया. और सही कहा था हमारे शाह साहब भी
the lawyer, they hardly 5% get reported. The rest all go under the carpet. एक बहुत गंदा रेप हुआ था to death of a girl from Ranikot in Sindh, and because he was हमारे सोना मुखड़ा president's best friend, तो उसको छुड़ा दिया. They broke the child's body, 9 years old girl. They broke her body in bits, but no one had the gall, even us so-called educated, to open their mouths. We are all sinners. जो ना बोले वो भी गुनाहगार जब जुर्म. तो we have to wake up. आपको अमेरिका नहीं चाह रहा. The Europe has said कि not we don't want Muslims. We can make this the country of the Qaeda-e-Azam if we really feel and care for it. But it starts with the child. A happy child is a good citizen. जो abuse होता है वो सारी उम्र. जावेद इकबाल was raped when he was 8 by his servant. I did that case. But we have to make this country, and you are all mostly young. हम सारे काफी उम्र के हैं. हमें ये मुल्क बनाना है, but you have to do it. You have to feel more for others, not for your dream, but for others. Every type of abuse is on air. So we are very grateful to Dr. and you are caring, but it's not enough. We have to open our mouths and share also. Thank you very much. Thank you very much. Madam, we understand you're very short of time. अगर आपसे तस्वीर खिंचाए बगैर मैं आपको जाना. नया रिश्ता आ जाएगा. All right, moving on. Next we have Chief Provincial Commissioner of Children Ombudsman's Officer, Punjab, Ms. Tawana Sajjad. Madam, please give your valuable remarks. My name is Tawana Sajjad Nasir, and I am the Chief Provincial Commissioner for Children in the Provincial Ombudsman Office. Just to give you a very brief introduction about this office, it has been set up for the redressal of children's grievances, which are filed by or on behalf of the children. We have a 24 hours helpline, which is working all the time for receiving complaints. We have a specified timeline of 45 to 60 days within which every complaint has to be concluded. So this is a very beneficial kind of forum for complaints because it does not involve any legal or financial constraints. But unfortunately, since child abuse is the concept of child abuse is a social taboo, we get very few complaints. जैसे अभी डिस्कस हुआ, सब लोगों ने ये बात कही है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अंडर द कार्पेट स्वीप किया जाता है, और जैसे महक ने भी कहा कि पहले तो we stayed in denial, but now it's very today's conference and this session has been very encouraging because one can see that people are really concerned. और Dr. Naeem को तो मैं बहुत my sincere felicitations to him for carrying out this wonderful cause. तो इस वजह से और बाकी जैसे हमारे stakeholders ने take up किया हुआ ये subject, it's very encouraging to know that people are showing a lot of concern for it. But at the same time, problem ये है कि there is a lack of awareness. तो इस aspect को cover करने के लिए what I have been trying to do is to carry out awareness campaigns in different districts of Punjab because we have regional offices which are associated with the Ombudsman office. तो उन offices को साथ मिला के तो मैंने कोशिश की है कि different जितने भी districts हैं वहाँ जाके awareness campaigns किए हैं, तो लोगों को बताया है कि ये ऑफिस एग्जिस्ट करता है और ये जो भी कोई कंप्लेंट हो इसको यहाँ को फाइल कर सकते हैं. But again, at the risk of repetition, because the legal aspect has been fully covered by Mikdad Saab, what I would like to say is that it's very unfortunate that there are laws which exist
for abuse against children, but there is very weak implementation. तो इस वजह से, क्योंकि हम सारे ही aspects of child abuse से deal करते हैं, like child trafficking, early child marriage, street children, child labor. We also deal with online child abuse, which has recently come up as a very serious subject for concern, because during COVID, the children were laid off from school and they were operating online. तो उसमें opportunity मिल गई to people to abuse children online. और वो नंबर उसका जो है child online child abuse का वो increase करता जा रहा है. So I've held meetings with the department of in FIA which deals with cybercrime, और वो भी यही बताते हैं कि बहुत ज़्यादा cases हैं उनके पास pending, but problem is कि उसको perpetrator को trace out करना बहुत मुश्किल होता है. I've also held meetings with labor department, social welfare department, सबके साथ हमारा liaison है, और कोशिश यही होती है कि we should stay updated on all aspects of child abuse. I have visited the Boston jails. हमारे पास 2 jails हैं which are dedicated towards child criminals, called Boston jails in Faisalabad and Bahawalpur. और वो juvenile justice system जो है कहाँ तक वहाँ में implement हो रहा है और कहाँ तक नहीं हो रहा. I've been there and I've discussed it with the relevant authorities. So हमारी कोशिश तो यही है कि हम जितने aspects हैं वो हमारी liaison है with child welfare, child protection and welfare bureau, with the national NCRC in Islamabad. उनके साथ भी हमने MOU sign किया है. It's been a very encouraging session here with you all. And I see that there are some very important stakeholders who can do a lot, and I would like to wish them the best. And always, my office exists for this purpose only, and I would appreciate अगर मुझे आप लोगों की मिलती है कोई भी updates. I am really grateful to Madam Shaheen, और ये इतना ज़्यादा डायनामिक और वर्सेटाइल काम हो रहा है जो कि ये कर रही हैं खुद सिंगल हैंडेडली. तो ये हमें भेजती रहती हैं कंप्लेंट्स, क्योंकि डायरेक्टली कंप्लेंट्स आते नहीं हैं. तो वी रियली अप्रिशिएट कि ये इनके चैनलिंग हमारे साथ बहुत है, जिसकी वजह से हमें कंप्लेंट्स आती हैं. दूसरा हमने तरीका एक ये भी अडॉप्ट किया है कि ऑन मोशन पे हम केसेस लेते हैं. सो इफ दे are reported on the media or on social media, so then we take them up as all is called as own motion cases, और फिर उनको हम deal करते हैं. I thank you all. Thank you very much, Ms. Tawana. Most of the guests of honors I'm meeting for the first time, but there are a few जिनसे मैं पहली बार नहीं मिल रहा. तो next comments मैं लेना चाहूँगा Ms. Zahida Mansoor से. She is the program officer, Child Protection, UNICEF, Lahore. Madam. Thank you so much. सबसे पहले तो I wanted to congratulate पहचान और Pakistan Pediatric Association for organizing such a wonderful conference, pre-conference session on child protection case management and referral system. मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी जो हमारी पार्टनरशिप है पहचान के साथ, that is not for last 2 years, for last 4 years. और previously the focus from last 2 years to last 2 years, the focus was to providing the mental health and psychosocial support services within the hospital and within the communities. And that partnership was developed keeping in view the COVID situation जहाँ पे MHPSS services की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. But gradually पहचान has expanded this function within the hospital in collaboration with UNICEF. और चूँकि अभी जो हमारा टॉपिक है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन केस मैनेजमेंट पे है, और उस सिलसिले में आई वांटेड टू एक्सप्लेन केस चाइल्ड केस मैनेजमेंट
उसमें रेफरल सिस्टम बेसिकली ये है कि आपने सिस्टमेटिक तरीके से जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के कंसर्न है या कोड वायलेशन ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन है उसको मैनेज करना है और स्टार्टिंग फ्रॉम रिसीविंग द केसेस टू द क्लोजर ऑफ द केसेस पूरा सारा इसमें जो प्रोसेस है वो सिस्टमेटिक वे में करना है, मेकिंग श्योर कि जो सारी मल्टी डिसिप्लिनरी नीड्स हैं बच्चों की उस केस के हवाले से जो सर्विसेज चाहिए वो सारी इंश्योर की जाए वो मिले। और इस सिलसिले में 3-4 सेक्टर या सिस्टम्स बड़े इम्पोर्टेंट हैं, जब तक वो आपस में लिंक नहीं होते तो केस मैनेजमेंट नहीं हो सकती। वन सिस्टम इज द हेल्थ सिस्टम जिस पे अभी हम बहुत बात कर रहे हैं, जो कि पहचान जिस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। वी हैव 12 चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो कि हॉस्पिटल्स में 12 डिस्ट्रिक्ट्स में है एंड एज डॉक्टर नबीला मेंशन कि हमें नीड टू एक्सपैंड इट और उसके लिए मैं ये भी बताना चाहूँगी कि नाउ वी आर एक्सपेंडिंग फ्रॉम 12 to 19 districts, so 7 districts have been added for the extension period जो कि हम अभी जिस पे काम कर रहे हैं उसके फॉर्मलाइज्ड है पार्टनरशिप और उसके बाद हम 19 डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे और इसमें सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ही नहीं होंगे हॉस्पिटल्स में बट आल्सो द सोशल सर्विस वर्कफोर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग जिसके मिकदार साहब जिक्र कर रहे थे, देयर इज अ लैक ऑफ कैपेसिटीज विदिन द सोशल सर्विस वर्कफोर्स जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन की है, तो इस तरह से उनकी होगी। प्लस जो आज का इस सेशन का एक बहुत ज़्यादा एडवोकेसी पर्पस ये है कि एडवोकेसी की जाए, कमिटमेंट जनरेट की जाए फ्रॉम द गवर्नमेंट के जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की टीम है या कॉन्टेक्ट्स हैं वो डॉक्टर नर्सेस ना सिर्फ इनके करिकुलम के अंदर एडेड हों बल्कि और भी जो सोशल सर्विस वर्कफोर्स है पंजाब यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ से भी चाइल्ड प्रोटेक्शन के वर्कफोर्स निकल रही है सफाई करके, तो वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के इशूज और उसको कैसे डील करना है, क्या अप्रोच यूज़ करनी है, उसके बारे में भी उनकी कैपेसिटी हो। वो वहाँ से सारी इंस्टीट्यूशंस पर जो स्टडीज़ हैं वो इस पे, तो इस पे भी इंशाल्लाह सम जुडिशल की सपोर्ट लेकिन बाकी अदालों की सपोर्ट के साथ रिक्वायर्ड ये हो। दूसरा सिस्टम जो हेल्थ सिस्टम के अलावा है वो है लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम में जिस तरह मिकदार ने बताया कि सबसे बड़ा जो इसमें है वो पुलिस का है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो पुलिस के पास रिपोर्ट होते हैं और तो फिर आगे उनको नहीं पता चलता है कि हाउ टू डील विद दैट चाइल्ड प्रोटेक्शन के केसेस को कहाँ पे उन्होंने आगे रेफर करना है, कैसे उनको सर्विसेज देनी है। रिसेंटली जो डॉक्टर नईम साहब एक केस की एग्जाम्पल दे रहे थे जो कि पीजे के से रिकवर हुए हैं 29 चिल्ड्रन और वो सारे के साथ सेक्शुअल अब्यूज हो रहे थे, देवर किडनैप फ्रॉम पंजाब। मोस्टली जो बच्चे दाता दरबार और शाइन्स में होते हैं वहाँ से उनको किडनैप किया गया, तो जो कि माफियाज है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं उन्होंने उनको किडनैप किया है, जगह ले गए वहाँ पे उनके साथ ना सिर्फ पोस्ट लेकर बट होती नहीं है बल्कि सेक्शुअल अब्यूज के लिए। वो सारे बच्चे रिकवर हुए हैं पुलिस यूनिट जो कि CIA के उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने पास रखा हुआ था उन बच्चों को एंड दे वर नॉट प्रोवाइडिंग द सोशल सर्विसेज टू दोस चिल्ड्रन जो उनको चाहिए, तो दे वर नॉट गोइंग के हाउ दे कैन डू द केस मैनेजमेंट ऑफ सच केसेस। और जब मैंने इनसे मुलाकात की तो मुझे पता चला कि विदिन फ्यू मंथ्स उसी एक यूनिट ने कोई 98 चाइल्ड अब्यूज के केसेस रिसीव किए और दे वर नॉट अवेयर ऑफ कि भी कैसे हम पुलिस आगे कैसे किधर इन बच्चों को भेजे फटाफट सर्विसेज और कैसे इन्वेस्टिगेशन और ट्रेसिंग ऑफ द फैमिलीज करें। तो इस तरह का इशू बहुत ज़्यादा है विदिन द लीगल सिस्टम। पुलिस की कैपेसिटी की जरूरत है, ना सिर्फ कैपेसिटी बिल्डिंग करके एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है फ्रॉम द पुलिस स्टेशन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल या प्रोविंशियल लेवल जो भी एक ओवरसाइट बॉडी है जो ओवरऑल केस मैनेजमेंट के काम करेगी विच इज चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो। और तीसरा जो सेक्टर है वो एजुकेशन सेक्टर है। एजुकेशन सेटिंग्स के अंदर आपने पंजाब में देखा कि फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स वी आर रिसीविंग हाई प्रोफाइल चाइल्ड अब्यूज केसेस और हर तरह की एजुकेशन सेक्टर इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों में रिपोर्ट हो रहे हैं। तो दिस सेक्टर ये जो
2-3 सेक्टर्स हैं, इसके अलावा जो सोशल सेक्टर है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, या अदर डिपार्टमेंट्स है who has some role of child protection. तो ये 4 सेक्टर्स जो है, सिस्टम जो है, they should link with each other. केस मैनेजमेंट और रेफरेंस सिस्टम का मतलब है कि आप how you are managing the cases in a collaborative manner, using the whole government approach on the it's the responsibility of not only the government but the private sector, the civil society organization who are providing services. तो वो सारे आपस में collaboration और coordination के साथ बच्चों के केसेस को करें. हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं जो अभी आज जिसकी डिटेल बता रहे थे. पंजाब का अगर लॉ देखें, पंजाब इंस्टीट्यूट है, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट, जो कि कम्प्रीहेंसिव नहीं है. चाइल्ड अब्यूज की उसको डिफाइन नहीं किया गया, उसके अंदर स्टेरिंग ओनली रेस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड इश्यूज ऑफ चिल्ड्रन. चाइल्ड प्रोटेक्शन को कम्प्रीहेंसिव उसके अंदर एड्रेस की कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है उसके अंदर डिफाइन के जिससे आप कोऑर्डिनेटेड मैनर्स में जो है बच्चों के इश्यूज को डील कर सकें. तो यूनिसेफ फॉर लास्ट मैनी ईयर्स एडवोकेटिंग द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब have a enabling legislative framework for Punjab जो कि सारे child protection issues को address करें. In addition to that, जो child protection policy और एक draft child protection law भी बना भी है, लेकिन government को commitment चाहिए तो एक bill for forward. और जो child protection policy की बात कर रहे थे, NCRC is also including collaboration with UNICEF पंजाब में. UNICEF की technical support के साथ child protection policy बनाई गई है. गुड न्यूज़ कि उसके अंदर हमने केस मैनेजमेंट का कंपोनेंट कम्प्रीहेंसिवली डाला है ताकि जब केसेस चाहे वो किसी भी जगह पे रिसीव हो, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो, उसकी रजिस्ट्रेशन हो, बट एक पूरे फॉर्मल प्रोसेस से पूरे गुजरे वो केस और पूरी कोलैबोरेशन के साथ उसको मैनेज किया जाए और ऑल डिपार्टमेंट्स उसके रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइड द सर्विसेज, नॉट ओनली द हेल्थ सर्विस बट आल्सो लीगल सर्विस, सोशल सर्विसेज, मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट जो इस तरह के केसेस में चाहिए वो सब उसको मिले इन कोऑर्डिनेटेड मैनर्स. तो इसके अलावा यूनिसेफ इज सपोर्टिंग चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो टू पायलट द केस मैनेजमेंट सिस्टम. इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट्स में हम ये हेल्थ सेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, पहचान पूरी डिस्ट्रिक्ट में ये चाइल्ड प्रोटेक्शन केस मैनेजमेंट सिस्टम इनिशिएट को पायलट हो रहा है. और उसके लिए हमारा इस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनियन का चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो इस्टेब्लिश हुए हैं 7 डिस्ट्रिक्ट्स. और तो उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर प्रोविजन है इसके लिए सोशल सपोर्ट के लिए सर्विसेज में और मैनेजमेंट कुछ इनटेक सर्विसेज के जरिए और फिर रेफरल सिस्टम को जो बच्चों को अदर सर्विसेज चाहिए पूरे सिस्टम के साथ रेफर हो बाकी डिपार्टमेंट में बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स को केयर केस क्लोजर को सारा एक सिस्टमेटिक तरीके से केसेस को जो है मैनेज किया जाएगा. मैनेजमेंट के इसका तो ये दिस इज हैपनिंग विद द सपोर्ट ऑफ यूनिसेफ इन पंजाब. और आई एम श्योर विद द सपोर्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स एंड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इस सिस्टम को मज़ीद जो है वो एक्सपेंड किया जाएगा और गवर्नमेंट की ओनरशिप जो है वो मज़ीद इसमें जो है वो आएगी. तो थैंक यू सो मच. Thank you very much, Mr. आपने देखा है कि कितनी कमांड है. I still remember मास्टर ट्रेनर वर्कशॉप के अंदर he used to rectify ऐसे नहीं ऐसे करें. We were like, madam, we're still learning. हम कर लेते हैं. So thank you very much for your comments. Last हम guest of honors में से last जो हमारे honorable guest हैं उनके comments से पहले इसके फौरन बाद open discussion है. We'll be taking since we are very much out of our allocated time. So हम a few questions लेंगे. अपने questions अपने ज़हन में रखें. तब तक हम Child Protection Officer from UNICEF Islamabad, Miss Aisha Khan को मैं कहूँगा कि please अपने comments. Please. Thank you so much, and I'd like to join the rest of the guest of honors and thank Pehchan and the Child Rights Group for PPA for organizing this very important session. And thank you to the learned panel members for presenting such
important bits of the child protection system. So as we all know, the child protection system is composed of many elements. So we've touched on, the legal, the medical, services, awareness raising, all of these areas that we have to work together to not only respond to child abuse, but also to prevent it. And prevention can only happen through raising awareness, reaching out to communities, and working with all of you. So Zaida spoke about Punjab and the support that UNICEF is providing, the government, the CSOs, and working with various stakeholders on the case management and child protection systems. Similarly, we are working in all provinces and territories of Pakistan on the child protection system. So we work on strengthening the legal policy frameworks, we work on prevention, we work on awareness raising, capacity building, and the response systems. The case management is an essential component of the response system, but also the hospital-based child protection units, the legal system, police, all of these work together to provide response services to survivors of abuse, violence, and all the child protection violations that we see in our society. So it's not that one organization can cope with this vast agenda. We need to work in a very coordinated manner. Ms. Mehak mentioned this, and I would really like to emphasize that this is not the mandate of just the government. This is not something that just one of us or one organization can handle. The learned panelists mentioned that we cannot work in silos. We cannot work separately. There needs to be an integrated system, and UNICEF is pleased to work with the governments and with civil society, with academia on this system. But there's a lot that remains to be done. A colleague mentioned that we've come a long way. There's a long way to go. When you work in this area day to day, you look at the issues, you look and you can get disheartened. But I think, yes, we have come a long way, but if we work together, we can go much further. Some of the key things that we need to work on together in a coordinated manner include the awareness, because if cases are not reported, we cannot respond. And cases will only get reported if people feel safe. So we need to have that trust building of the community with the organizations that are providing these response services. How can that trust be built? It's the people that are providing these services. So the capacity building, the compassion, really the services that are being provided really need to be strengthened. Quality, not just the services existing, but the quality of those services, so that the communities can trust that yes, if we go to this service provider, we will get what we need. And it's not just that they go to one person and they get said that we told that no, you have to go to that particular place. Yes, there's a proliferation of services, of helplines, but there should be no wrong door. If those helplines exist, no matter what door that a survivor comes knocking to, they should be provided services. So again, for that, it's essential that we have the capacity. The training is needed of all frontline workers, so not just child protection officers, not just doctors, but nurses, all health professionals. We heard a case where some medical or health officer in a hospital was the one who was perpetrating abuse. Administrators, anyone who is coming in contact with children, with their families, needs to be made aware and needs to be have those basic training, that capacity to be compassionate, and if they themselves cannot provide the service, they need to know who to direct the people to. So the referrals and coordination is essential. And then expanding these services across the country. We do have across certain districts, but we know how big Pakistan is. I just want to give an example of a case just yesterday. While I was on my way to Lahore for this, I got a call from my colleague in AJK. This 7-year-old girl had been raped in Mirpur. There are no services available in Mirpur for a victim of rape. So they reached out to the social welfare department, and the women development department lady, the social welfare officer, called crying to our colleagues in Ravla Court.
that I don't know what to do. How do I help these people? And so we scrambled, we tried to reach out and get those services, but that should not be the case. There should be services in every district, and until and unless every child who is a victim of abuse can reach those services, our work is not done. And we will continue to work until every child in Pakistan is protected. First of all, they need protection. But we know that abuse does happen regardless of the protection, regardless of where you are. So not only protection, but response, and effective and quality response for the children of Pakistan. Thank you. Right. Thank you very much, Ms. Aisha Khan, for your comments and your work when it comes to the federal department. Now, we'll be taking very brief, couple of questions only. Because this is the only session where we have healthcare workers, educationists, humanitarians, along with the government, along with the international NGOs, different departments. So we would like to take this opportunity, please, sir. Would you please introduce yourself and ask your question from any panelist or the guest? I'm Dr. Jawad. I'm a pediatrician. First of all, it's a wonderful session and मेरे लिए बहुत ज़्यादा eye opening था. मैं बहुत brief बात करूँगा. First of all, my first take-home message is from Madam that the only way we can bring this change in our society is women education, women power. जितनी मर्जी सोसाइटी बना लें, जितनी मर्जी कर लें, जब बच्चा एक बार अब्यूज हो जाएगा, उसके बाद सोसाइटी में जाकर कोई फायदा नहीं. And the only one that can help a child is the mother. No, but not even a father. So please अपनी डायरेक्शन थोड़ी चेंज करें और वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एजुकेशन पर जाएं, तो आपको शायद बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत ना पड़े और बहुत सारे हम लोग की शायद नौकरी The second point is the elephant in the room. ये मेरी सारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, come from a family. ये मेरी मदर, मेरी वाइफ, मेरी 4 बहनें वर्किंग वुमेन. मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, जब आप लोग जॉब करेंगी, जब आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, क्या आप अपनी एक छोटी बच्ची को गांव से लाके अपने बच्चों के रखेंगी? रखेंगी. बहुत सारों ने रखी हुई होंगी. And nobody will say. और आखिरी point, हम सब ये सोसाइटी में से है ना, कोई आदमी खड़ा होकर ये कह सकता है कि मेरे साथ चाय की दुआ करो. हिम्मत ही नहीं है हमारे. Very thoughtful. Very challenging topic. Professor Nabila. Thank you, Dr. Jawad. I appreciate. And in continuity with your second question you asked from the medical female staff, I think again the role of the government comes in. How many of the institutes have 24/7 daycare? Unless you provide 24/7 daycare. मेरी अपनी बच्चियां जो मेरे साथ मेरी ट्रेनीज मेरी SRC में 24 ऑन कॉल भी होती हैं सर्जरी में इमरजेंसी करती. 3 बजे से पहले इस कदर परेशानी का आलम होता है, मैडम डे केयर बंद हो जाएगा, प्लीज बच्चा पिक करके फिर वापस आ जाएंगे. रूट कॉज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन, बट वो कहाँ से आनी है? उसके लिए ग्राउंड बनना है. हम बेसिक नेसेसिटीज को एड्रेस कर पाएंगे तो लग्जरीज की बात करेंगे. आई थिंक डे केयर सेंटर्स आर नो मोर लग्जरीज, दे आर नेसेसिटी, एसेंशियल पार्ट एंड नॉट फॉर द डे. Their name should be changed. They should be child care, baby care, whatever the appropriate name. But day care means 8 से 2 की services और उसके बाद फिर वो क्या करेंगी माइंड. So इसके ऊपर भी I would request कि अगर stakeholders तक के बात जाए गवर्नमेंट साइड तक कि 24/7 जो हैं वो child care units जो हैं वो available होने चाहिए in all workplaces, not only hospitals, all hospitals. One last comment and question from the educational sector. Sir, please introduce yourself. I'm Arshad, I'm Assistant Professor of Social Work from University of Punjab. First of all, I would like to congratulate the Chan team and UNICEF team for conducting this amazing event. I'm working with child protection for the last 20 years, and I have had opportunities to attend such events so many times. I have learned a lot from this event. मैं बहुत छोटी सी बात करूँगा. यहाँ पर काफ़ी सारी बातें हुई हैं. 1997 के ILO के सर्वे से स्टार्ट करता हूँ. मैं छोटी सी बात करूँगा. उस वक्त 3.7 मिलियन 3.67 मिलियन
child laborers were identified throughout the country. اور اس کے بعد ILO, IPAC اور UNICEF اور بہت ساری آرگنائزیشن نے کام شروع کیا. لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آلموسٹ آپ نے ابھی ریسنٹلی سروے کروایا ہے تو آپ فگر جانتے ہوں گے تقریباً 9 ملین کے قریب ہوں گے. رائٹ. تو اتنی بڑی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہم نے بہت ساری انٹرونشن کی, بہت ساری انویسٹمنٹ کی. بالکل اسی طرح سے اگر چائلڈ ابیوز کے کیسز دیکھیں تو اس میں بھی ایک ہمیں نظر آ رہا ہے. آؤٹ آف اسکول دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں 250 ملین چائلڈ آؤٹ آف اسکول نظر آتے ہیں. لٹریسی پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے ریسورسز بھی اسپینڈ ہو گئے, اتنی انٹرونشنز بھی آ گئی, اتنی منسٹریز, کمیشنز اور اتھارٹیز بھی بن گئی. تو یہ جو انکریز ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے خیال کے مطابق, میڈم بیٹھی ہوئی ہیں, مجھے بات نہیں کرنی چاہیے ویسے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ڈاکٹرز نظر آتے ہیں. اگر وہاں پر لائرز بیٹھے ہوئے نظر آئے تو ہم چوکیں گے نا کہ یہاں تو ڈاکٹرز کا کام ہے. جب ہم ہائی کورٹس میں جاتے ہیں تو وہاں پر لائرز نظر آتے ہیں. انجینئرنگ کمپنیز میں انجینئر نظر آتے ہیں. یعنی جو اس سے ریلیونٹ پروفیشنل وہاں پر نظر آتے ہیں. کہ جب ہم چائلڈ پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کوئی جغرافی کا بھی نظر آ رہا ہے, کوئی ہمیں پولیٹیکل سائنس کا بھی نظر آ رہا ہے. سو کیا دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے؟ چائلڈ پروٹیکشن کا اتنا ہی ایزی اور مطلب سمپل ایک ایشو ہے جس کو کوئی بھی اٹھ کر, جس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ بھی نہ ہو, جس کی کوئی کیپیسٹی بھی نہ ہو, اسکلز بھی نہ ہو, کمپیٹنسیز بھی نہ ہو, اس کو ہم چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر کام کرنے کے لیے لگاتے ہیں. ہم نے بھی پالیسی کی بات کی. کیا ہم نے پالیسی میں یہ طے کر لیا ہے کہ جو چائلڈ پروٹیکشن پہ کام کرنے والے ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کی جو کیپیسٹی میں کام کریں گے, گورنمنٹ آفیسر بنیں گے, ان کے لیے کوئی پراپر ریلیونٹ کوالیفیکیشن ہوگی؟ اچھا کوالیفیکیشن تو چلے ہم رکھ لیں گے, ہمیں وہ پروفیشنل ملیں گے کہاں سے؟ کیا آپ نے پاکستان کی کسی بھی ایک یونیورسٹی میں کوئی چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے ڈپلوما, کوئی ڈگری پروگرام, کوئی سرٹیفکیشن شروع کی ہے؟ آپ کو جب ہیومن ریسورسز سپلائی نہیں ہوں گے تو آپ کو وہ کوالیفیکیشن رکھ بھی دیں گے تو پھر وہ نہیں ملے گے. سو میری ریکویسٹ یہ ہے میڈم سے, میڈم بیٹھی ہوئی ہیں, کہ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم اتنی بڑی انویسٹمنٹ جب کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کی یوٹیلائزیشن کون کر رہا ہے. Ms. Asha, would you like to quickly respond to that? Yes, I'd just like to respond to this point on the social work education side. Yes, developed countries में आपकी social work is a professional field, right? So हमारे मुल्क में ऐसा कोई field नहीं है. हमारे मुल्क में social work education करते हैं, लेकिन like you rightly pointed out, कोई भी उठ के ना आके social welfare officer, child protection officer, background. In fact, जब हम floods में response कर रहे थे, we were looking for child protection expertise. हमें नहीं मिलती थी. We had to hire psychologists, teachers. So this is a big lack, and this is something that we are now starting to work on. बाकी बहुत मुल्कों में हमारे पास examples हैं of this professionalization of what is a child protection social service workforce. We need to work on it, and yes, we are initiating work, and inshallah. जो next conference में अगर हमें बुलाएंगे, we will present on how we've progressed on that area. Excellent. The next workshop is. Just add, we started that. Myself, see, at the University of Lahore, we started a department of child rights, and we started to provide 1 credit hour, 3 credit hour courses, and we did about 2,000 students on that. When we went to the Higher Education Commission for a degree in child protection and child rights, they did not understand hota kya hai, karte kya hai. For 3 years, we could not get the clearance, and ultimately came in COVID, और हमारा department ही बंद हो गया. So सारा महल बैठ गया. देखिए जो नेक्स्ट जो हमारा सेशन है ना, वो लोग आके काफी देर से खड़े हैं. So just वो भी one मेरे minute, टीचर्स में से हैं. Please, I understand everybody is bubbling with. जी, 2 चीज़ें हैं. एक हमारे केस रेलमेंट, एक सर ने जैसे बात की गवर्नमेंट्स की एम्पावरमेंट की, मैं वहाँ बात करूँगी. डेवलपमेंटल डिले और बिहेवियर इश्यूज उस वक्त आते हैं जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल जो है वो हार्श एटीट्यूड और एग्रेशन का शिकार होती है, एग्रेसिव बिहेवियर का शिकार होती है. तो वहाँ पे हमारे मेल्स की भी डिपार्टमेंट और उनके बिहेवियर पे भी काम करने की जरूरत है. सारा दो फीमेल पे नहीं लगाना, ये सारे बच्चे जो है उस वजह से होते हैं. सेकेंडली आपने कोर्सेज की बात की, तो मैम जाहिदा को बिल्कुल याद होगा कि लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर हम एक डिप्लोमा अनाउंस करेंगे मुफ्ती यूनिवर्सिटी के साथ. इस पर हमने थोड़ा सा काम किया था, लेकिन अब फर्दर हम इंशाल्लाह इस पर करेंगे कि पहचान के साथ मिलकर हम यूनिवर्सिटीज़ में ये डिप्लोमा स्टार्ट करवाएं.
thirdly it's important. अभी केस की बात हुई थी जो हमें 29 चाइल्ड्स को रेस्क्यू किया CIA ने, और उसके बाद पहचान CPWP और यूनिसेफ की हेल्प के साथ हमने उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दिया, मेडिकल मैनेजमेंट दिया, उनका मेडिकल स्क्रीनिंग भी हो गया उन बच्चों का. अब हमें जो इशू आ रहा है, जिसपे मेरा क्वेश्चन है कि हमें वो 4 बच्चे जो 16, 17, 18 ईयर बच्चे हैं, उनके वालिदैन उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे. वो पिछले 4 साल से किडनैप थे. मोर देन 40 टाइम वो गैंग रेप का शिकार हो चुके हैं. मैं उन बच्चों से जब बात कर रही थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे और मुंह से उनकी स्माइल थी. वो कह रहे थे हमारे वालिदैन अब हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे. ठीक है, वो घर से भागे थे, वालिदैन नहीं लेना चाह रहे. बट क्वेश्चन इज दैट कि हम इन बच्चों को कहाँ पे कहाँ बोर्डिंग के लिए भेजें. CPWP 14 से वक्त नहीं लेता. AD में हम उन्हें नहीं भेज पा रहे. इसके अलावा आगोश अगर प्राइवेट में जाए वो भी 8 से वक्त नहीं लेता. इसके अलावा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूट है वहाँ भी यही प्रॉब्लम आ रही है. अब हमें सिर्फ क्वेश्चन सब तमाम स्टेक होल्डर से है कि इन बच्चों के लिए क्या करना है. हमारे पास शॉर्ट टाइम है, हमने उन्हें भेजना भी है. पेरेंट्स टाइम लगेगा उनके पेरेंट्स को एग्री करने में. तो यहाँ मुझे प्लीज बताइए उन बच्चों के लिए क्या करें. और इसी तरह स्पेशल बच्चों को भी हम करते हुए हमारे लिए मुश्किल आती है. CP चाइल्ड आ जाता है या फिर कोई मेंटली फिजिकली होता है, उनको पेरेंट्स हॉस्पिटल में फेंके चले जाते हैं. उन बच्चों के लिए भी हमें कोई ऐसा प्लेस नहीं मिलता कि हम उन्हें हैंड ओवर कर सकें. प्लीज मिस आयदा प्लीज ब्रीफली कमेंट कीजिए. आर्या, थैंक यू सो मच. आई नो, मैं भी इन बच्चों से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पेरेंट्स आर नॉट एक्सेप्टिंग. लेकिन इस केस में जब ये बच्चे ज़रा थोड़े बड़े एज के हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में उनको डालना है, साथ से तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फैमिली ड्रेसिंग करें और उनके साथ बातचीत करें, काउंसलिंग करें. इफ द पेरेंट्स आर नॉट देयर देन दे हैव देयर एक्सटेंडेड फैमिली. हमारी कोशिश, क्योंकि अभी तो वो बच्चे बता रहे हैं ना, वी आर नॉट रीच्ड टू देयर पेरेंट्स, वी आर नॉट नो कि भी क्या वहाँ की सिचुएशन है. हमें इंस्टीट्यूशनल केयर नीड टू कंसीडर एज अ लास्ट रिजन, नॉट द फर्स्ट. फ्यू डेज या फ्यू मंथ के लिए जब तक उनके पेरेंट्स एग्री नहीं कर जाते, पेरेंट्स रीच हो गए हैं बट वो अभी लेके नहीं जाना चाह रहे, बच्चों को हम वहाँ छोड़ नहीं सकते. तो उतने दिनों के लिए, हफ्तों के लिए, महीने के लिए हम उन्हें कहा. मैडम, सोशल वेलफेयर की बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल केयर की सर्विसेज है, आफियत है, और इस तरह के दावे आप एज लिमिट है. ठीक है, है उनके पास जी जी ओके ओके थैंक यू. क्योंकि बहुत हम ऊपर चले गए, हमने बहुत जो है वो ले लिया. वो राइट्स की बात कर रहे हैं ना, अगले सेशन के राइट्स हम खुद को मांग रहे हैं. सो द पॉइंट इज के लेट्स वाइंड दिस अप एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज डॉक्टर अमीर मोहम्मद जोगेज़ई टू गिव अ वोट ऑफ थैंक्स. एक बात है, मैंने काफी से ट्राई किया था, किसी ने सुना है. मेरा नाम है नौशी जान और ट्रांस के ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन अदालत था. जैसे चाइल्ड की बात हुई है तो हमारे जो ट्रांस है उनके साथ तो बहुत ज़्यादा वायलेंस भी होता है. और कुछ ऐसी काम के सिलसिले में ऐसे लोग मिलते हैं कि पॉपुलेशन जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल के है, जो FSW है, उनके बच्चों को ना तो एजुकेशन मिल रही होती है, ना उनको ID कार्ड का उसमें बेफारमी हो रही होती, ना ही और काफ़ी चीज़ों में. इसी तरह जो ग्राउंड लेवल के लोग जो है, जो बच्चे जो है वो नशे में और इसके अलावा वो क्या कहते हैं शिकार हो जाते हैं और काफ़ी मसले में मिसाइल में गुजरे. लेकिन हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पर ये काम करना बेहद बहुत जरूरी है. कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अदारों में, जहाँ भी हो. जाहिर है हमारे साथ बच्चों के साथ हमारे ट्रांसफी हैं जो ख्वाजा घर से निकल जाती है, रखने के लिए कोई नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ रुकना चाहिए. हम तो सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा एक शेड रूम होना चाहिए जो सोशल वेलफेयर और बैतुल माल से मिलकर बनना चाहिए. तो उनकी केयर और उनकी सपोर्ट, उनकी एजुकेशन पर काम करना चाहिए. जब हम सब लोग मिलकर इस प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं तो हेल्थ के बारे में, तो सबसे पहले ये कि TB भी हो सकती है उनको सेक्स के मसले भी हो सकते हैं, उनको HIV भी हो सकती है. क्या हम उनको ये पूरी फैसिलिटीज दे सकते हैं? नहीं दे सकते.
देखिए जब हम अदारों में लेके जाते हैं सबसे मुश्किल काफी प्रॉब्लम हमें साथ सॉल्व होती है पॉइंट वेल टेकन और मेरे ख्याल में हम इक्वल आर हियर आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं ठीक है रेलेवेंट सो सर वेरी ब्रीफली आई वुड लाइक टू प्लीज आपको जरूरत होगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर अमीर मोहम्मद जोगे सर Thank you very much. मुझे बिल्कुल ही अब सब लोग इतने जज्बात में हैं और लॉसेस भी आ गए हैं कि हमें भी बोलना आता है बोल सकते हैं हमारे चाहने वालों को अगर बुरा ना लगता बोलने को तो आप बोल ही सकते हैं बहुत सारे लोग बोले हैं बहुत सारे हैं और इस वक्त ऐसा वक्त है कि सब लोग जज्बात में हैं So I'm very grateful for the Pehchan to organize this very important session in pediatric conference. The pediatric conference जो नेशनल IEL है इसकी बड़ी अहमियत है और मैं इस फेस को देख रहा हूँ कि the attendance is very good. हमारे जो my right और my left तमाम जो हमारे बड़े अच्छे लोग बैठे होते हैं लेकिन एक बात जब ये बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट हुकूमत की प्रायोरिटीज ये नहीं रही मेरे ख्याल में वी शुड नॉट एक्सपेक्ट दीस थिंग्स कि हुकूमत हमारे लिए ये करे हुकूमत वो करे अब हुकूमत की वो प्रायोरिटीज नहीं है हुकूमत और ही चीज़ों में उलझ गए हैं और ही दलों में लग गए और ही किस्से में लग गए ज़मीर की बात बिल्कुल अल्लाह की बात नहीं मेरे ख्याल में हमको जो हमारे हिस्से का काम है हम उसको करते जाएं और करते जाएं और करते जाएं थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच सर अब क्विकली स्पीड ऑफ लाइट के साथ सब असेंबल हो जाए हम यहाँ पे ग्रुप फोटो करके हैंड ओवर करना है नेक्स्ट सेशन को क्विकली अपने लंच बॉक्सेस वहीं पर छोड़ के फटाफट आइए मैडम सर प्लीज आप साथ आपकी तस्वीर के बगैर मैडम को पूछ के बनाओ ना नहीं वो मैडम का